morning oil. So it's a bright sunny morning in Binsar. अभी मैं balcony में हूँ अभी resort के और you can see the valley view is amazing. So बिल्कुल valley के बीच में situated है ये resort. Right here you can see solar panel roof पे they have implemented. बहुत ही ज़बरदस्त व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट. So the balcony is also, like you can see, it's very spacious. You can sit here and spend some good time here. So अभी धीरे-धीरे करके we'll explore this valley. It's new for us as well because पहली बार आ रहे हैं हम लोग भी. Hopefully next 2-3 days काफ़ी मज़ा आने वाला है. ब्रेकफास्ट करने निकले हम लोग अभी और 10 o'clock in the morning. Property seems to be beautiful. काफ़ी बढ़िया लग रही है. We're going to the restaurant. You can see the entire view. It's looking beautiful. प्रॉपर्टी टूर करेंगे डे में और नेचर वॉक इज वन ऑफ द एक्टिविटीज दैट दे हैव प्लान्ड. बर्ड सॉन्ग इज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. अभी ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है. राइट, सो ब्रेकफास्ट में बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल आर लेस, सो बुफे इज नॉट ऑपरेशनल. ओनली 2-3 आइटम्स आर देयर इन द बुफे. द कंप्लीट मेन्यू वो ये लोग हम ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ से अंदर से ही वो सर्व हो जाएगा. राइट, सो अभी ये रेस्टोरेंट के बिल्कुल बैक साइड पे मैं आ गया हूँ टू सी द वैली व्यू. The view is amazing. The view is awesome. अभी फ्रंट साइड पे चलते हैं. तो काफी ग्रीनरी है यहाँ पे. You can see ये नीचे आप देखिए ये थोड़ा किड्स एरिया है. किड्स एरिया है, यहाँ पे स्लाइड्स, झूले लगे हुए हैं. Overall, the look and feel very good. यहाँ पे पेंटिंग एक्टिविटी हो रही है. थोड़ा हट स्टाइल स्ट्रक्चर है प्रॉपर्टी में. सेरेन पर आप देखें तो ये वाले जो रूम था राइट साइड पे जो ये सारे वैली व्यू रूम है. गार्डनिंग भी काफी अच्छी बनी हुई है. एक छोटा सा झूला लगाया स्विंग. बैठने की जगह भी है इधर. यहाँ पे बेसिकली यू कैन सिट एंड एंजॉय द नेचर व्यू. So you can actually do some cycling. Sizes भी different are available. तो अभी जैसे मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द रिसेप्शन एरिया.
अभी रेस्टोरेंट से थोड़ा सा और ऊपर आ रहे हैं, छोटा सा गार्डन है, थोड़ा सा व्यू बड़ा है यहाँ पे। झूले भी लगे हुए हैं। बेसिकली बैक साइड ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे रेस्टोरेंट के साइड में ही एक छोटा सा एक्टिविटी एरिया है। गेम्स यहाँ पे लगी हुई है। एक तो फूटबॉल है, लूडो, कैरम एंड चेस। आपको ये गेम्स आपके बचपन में वापस ले जाएंगी। और उसी के साथ में ही एक छोटा सा रूम है, एक एक्टिविटी एरिया है यहाँ पे। तो इंडोर एक्टिविटी एरिया इनसे पूल टेबल, टेबल टेनिस, आइस हॉकी। काफी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, मतलब तो फीलिंग, लुक एंड फील been created. It's well managed. So I'll take you to the rooms which we have booked in Club Mahindra. So we opted for a studio apartment. See, so the bed, the rooms are beautiful, maintained properly. Also room freshener spray किया हुआ है. So having a very good feeling. ये सोफा है, सोफा कम बेड है। स्टूडियो अपार्टमेंट में यूजुअली यू गेट अ सोफा कम बेड अलॉन्ग विद द डबल बेड, राइट। तो बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप करता है, तो ऑयल हीटर्स आल्सो दे आर पुट इन, यू कैन सी द ऑयल हीटर्स एंड ऑब्वियसली टीवी with a set-top box. Plus, the another advantage of having a studio apartment is that you can see there's a small kitchen area. So the basic items if you want to prepare like tea, coffee, or oats, Maggi, so you can prepare it with the ovens here. Then there's a small dining area. The view is very good. Rooms बहुत अच्छे से maintain किए हुए हैं. Alright, this is the balcony. You can see. Then I'll take you to the washrooms. Property is superb, very nice. Superb washroom. You can see it's maintained. Right. So that's all for the room. ये rooms को opt करना it's a worth. What I would suggest is कि if you're coming with family, then आपको studio opt करना चाहिए, definitely.